Good evening to all my dear friends. As you know that I am taking second class on the landmark judgment which has been prescribed in your syllabus on the topic of the Prevention of Corruption Act 1988, and the name of that case is Kalicharan Mahapatra versus State of Maharashtra, decided by Honorable Supreme Court on 4th August 1998. And on this point, questions was that, as you know that here I will take 5 minutes to summarize whatever I have discussed in the previous class. After 5 to 10 minutes, I will start new things. Okay. I know that several things I have already discussed, but I will take some time. To come to the point here, as you know that in the previous class, I told you that there was a questions asked in 2019, and there were 20 marks. And regarding the nature of question, there are two parts. This part was the facts. This part was the fact, and this part was the main question. This was the main question of this question. As you know that whoever have framed this question paper, he had taken the issue from the Kalicharan case. He had taken the issue from the Kalicharan case. As you know that in the Kalicharan case, there were several issues. Among them, one of them is that whether sanction is required for prosecution of accused police officer of the accused means here question is that regarding the suspected regarding the retired officer. Everyone know that everyone know that in the case of acting public servants there is no confusion, and every time sanctions is mandatory. But here confusion is regarding the retired public servants. As you know that why confusion arrived, why there was a vacuum, why there were several landmark judgments decided by honorable Supreme Courts, but ratio of them were totally different. Why? Because Prevention of Corruption Act was silent. Prevention of Corruption Act before 2018 was silent. If anything is silent, you have to answer either to positive response or negative response. Suppose that Shivani asked me, "Sir, please give me attendance." I did not respond. I did not respond. Neither I say neither a positive manner or not in the negative sense. It means Shivani has two options: either to infer negative inference that sir will not give attendance, or she may draw the positive attendance. Okay, sir is silent. It means he will give the attendance. Two options. At the same things happened in this particular law. Before 2018, law was silent. Where law was silent? Law was not saying regarding the retired public servants. That's why question was that whether sanctions in the case of retired public servants is necessary or not. Some of judgments said that negative answer. Negative answer means no, sanction is not required. For the example, in the Kalicharan case, it was said that sanction for the retired public servants is not necessary. And regarding some other cases in which it was said that positive manner means yes, sanction is required. As you know that after 2018, nothing is doubt. As you know that yesterday I told you that the how to reply answer of this question, because question is 2019. Suppose that 2017 answer will be different, but question is 2019. Answer will be two parts according to the Mahapatra judgment and according to the Amendment Act. Here, according to the Kalicharan case, no sanction is not necessary. It means in that case here here in this whether sanction is required, two part. Whether sanction is required, two part. According to the Kalicharan case, answer will be no. According to the PC amendment in 2018, answer is that yes. See the different answer. Here question is whether sanction is required. Suppose that I asked Shivani. Shivani replied me whether sanction is required. She will reply, respected sir, there are two answers. If we will observe according to the Kalicharan case,
In that, according to the ratio of that case, sanction is not required. But if you analyze this problem according to the uh, Prevention of Corruption Amendment Act, that is after 2018, it means sanction is required. So my conclusion is that current position is that sanction is required even in case of the retired public servants. And all these things we have already discussed. Regarding the, yes, there was a two option according to Kalicharan, not necessary. According to the amendment, this is the necessary. Come to the point. Point was that, as you know that, how many law discuss about the granting of the sanctions? How many laws discuss about the granting of sanctions? We can divide it into six parts. We can divide into six parts. Six parts, sorry, six parts can again be divided into two parts. For example, this is the first part and this is the second part. Sorry, this is the second part. It means, sorry, wait, please wait, give me one time. Yeah, कैसे नहीं आया? Yes, this is the first part. This is the second part. It means there are total how many laws discuss about the discuss about the sanction? Six laws. Old PC Act, new PC Act, and PC Amendment Act. These are 3 points. Old CRPC and new CRPC. These are the points. And how to understand public servants? Everyone knows that public servants can be divided into two parts. How many parts? Public servants can be divided into two parts. Regarding the acting public servants, what is the position? Regarding the active public servants, all the six laws clearly says that in the case of acting public servants, sanction is mandatory. All laws give protection with express words and previous sanction is mandatory. It means regarding the acting public servants, nothing is doubt. So even a single judgment has not been decided whether in case of public servant sanction is mandatory or not. Why not even a single case? Because law is crystal clear. That's why there is no need of the judgment. That's why there was no confusion, no judgment. But regarding the second part, retired public servants. What is the position of retired public servants? In that case, laws are divided into two parts. According to some laws, previous sanctions. Sorry, wait. I wanted to say one minute. Here, law is expressly say. This is the express words. Here, point is that most important word expressly. It has been clearly written. Is. It means if he is acting public, he is public servant. He is public servant. Is a public servant. It means each and everywhere it has been expressly has been written regarding the acting public servants. Okay, there is no any problems. Okay, and suppose if someone is asking, sir, which provisions discuss about this? We can say that section 6. Which provisions of this section? Section 19. As you know that this amendment is also related to 19. CRPC, old CRPC, which section? 197. New CRPC, which section? 197. These are the bare provisions. Okay. On the point of active public servant, law is express. Okay. But regarding the retired public servants, law can be divided into two parts. Some laws are silent. They did not respond. They are totally silent. They say nothing about the retired public servants. And some laws give express protections to them. It means here, regarding the retired public servants, law can be divided into two parts. First is that law expressly gives protections. For example, PC Amendment Act 2018, it means after 2018, after the amendment of 2018, here law especially says that yes, sanction is mandatory in the case of is a public servant or was a public servant. Okay. CRPC, new CRPC, this is the new CRPC and which section? Everyone know 197. It what words they use? The word used is as well as was. The word use and was.
What amendment use the word? Two words, is as well as was. But regarding the another laws, for example, these types of three laws, these three laws are silent. They are not responding. और न ही कहता है ना कि एक इस तरह का है, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, तो शायद ऐसा ही कुछ हो सकता है। जब आदमी रिप्लाई नहीं करता है ना तो अंदाजा लगाता है। सपोज दैट अगर अखिलेश हमसे कुछ कहे और मैंने यस या नो में रिप्लाई कर दिया, तब वहां पे कुछ बात हो ही नहीं सकती है। ये जो कंफ्यूजन अराइज होता है, वहां पे कंफ्यूजन अराइज होता है जब कोई भी चीज साइलेंट हो। जब साइलेंट होगा तो कंफ्यूजन अराइज होगा, तो उसके दो पॉइंट इन्फरेंस होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। जैसे भी आपको बता रहा था, कहता है ना कि दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, तो दो बातें हो सकती है, एक बात नहीं कह रहा है, दो बात हो सकती है। या तो दुनिया से डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। अरे गजब यार, मैं भी गाना वाना याद है ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश, हाँ तो सुन रहा मैं। हाँ, हमें लग रहा है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस था नहीं, लेकिन इम्प्रेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। That's why my point is that that's my problem arises from here. Love was silent, okay? Which law was silent? PC Act 1947, PC Act 1988, and old CRPC was silent. What happened? According to the argument of the appellant, this is the argument of the appellant, and this is the ratio of the judgment. According to the appellant, what was his argument? He was saying, Millards, PC Act is silent. PC Act is totally silent. That's why this act should not be applicable under the Prevention of Corruption Act. So, Prevention of Corruption Act doesn't cover retired public servants. ये कहा कि जब ये लॉ साइलेंट है तो इसका आप निगेटिव आंसर ड्रॉ करिए, और निगेटिव आंसर क्या निकल करके आएगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन द रिटायर्ड ऑफिसर्स, दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड under the IPC or any other law, but they should not be tried under the Prevention of Corruption Act. ये आर्गुमेंट था अपीलाट का। तो जज ने कहा कि ठीक है लॉ साइलेंट है, तो तुम ड्रा कर रहे हो कि ये अप्लाई ना हो। जब लॉ साइलेंट है तो मैं भी ड्रा कर सकता हूं कि नहीं ये लॉ अप्लाई होगा। आर्गुमेंट कहता है कि जब लॉ साइलेंट हो तो आप इसको निगेटिव मानिए, और निगेटिव क्या है कि मेरा केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में ट्रायल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ट्रायल होना चाहिए? क्यों? क्योंकि पीसी एक्ट रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। रिटायर्ड, दिस इज टोटली साइलेंट अबाउट द रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स। ये निगेटिव आंसर सर्च कर रहा है। तो कोर्ट कह रहा है यस, पीसी इज टोटली साइलेंट, दैट्स व्हाई आई कैन टेक अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स that it also includes retired public servants. बस इतना की लड़ाई है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लेंगे। लॉ जब साइलेंट है, अपीलांट का अपना रीजनिंग है कि भाई जब साइलेंट है तो अप्लाई नहीं होना चाहिए, अब कोर्ट का कहना है कि जब साइलेंट है तो अप्लाई होना चाहिए। अब कोर्ट क्यों जिद कर रहा है कि साइलेंट है तो अप्लाई होना चाहिए? क्या रीजन है? रीजनिंग क्या है? ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी भी पढ़ाता हूँ, 2 मिनट और लूंगा। कोर्ट ने रीजनिंग क्या दिया? कहा कि अगर मान लीजिए कि हम अप्लाई नहीं करते हैं, उसका आंसर क्या है? यस, अप्लाई होगा। लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो तुम लोग करोगे क्या? कोर्ट ने बोला कि तुम लोग क्या करोगे? रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, 5-6 महीना बचा रहेगा, तो तुम 2 काम कर सकते हो। क्या करोगे कि बड़े बड़े घोटाले करके आसानी से, तुम्हें मालूम है कि 5-6 महीना में बाद हम रिटायर हो जाएंगे। अब 5-6 महीना तो ऐसे भी किसी को पता भी नहीं चले करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही होता है ना, करप्शन के मामले से जब आरटीआई फाइल होती है, जब 2-4-10 दिन बीतता है या सरकारें चेंज हो जाती है, तब पता चलता है ना करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। करप्शन तो टोटली डिफरेंट थिंग है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि तुम लोग करोगे क्या कि करप्शन से रिटायर होने वाले रहोगे, उससे साल भर पहले से एकदम एक्टिव हो जाओगे, आज जबरदस्त करप्शन करोगे, करप्शन कर करके तुरंत रिटायर हो जाओगे। जब रिटायर हो जाओगे बाद में आर्गुमेंट करोगे कि नहीं पीसी एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा।
तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है कि करप्शन को रोका जाए, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि 99% जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो अपने कार्यकाल के लास्ट टाइम में करप्शन करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि अब उनको मालूम होता है अब हमें रिटायर ही होने वाला है, जो होना था वो हो गया, चलो निकल लेते हैं। और एक ने कहा कि मान लीजिए कि तुम 2 साल पहले से करप्शन करना शुरू कर रहे हो या 4 साल पहले से कर रहे हो, अब तुम्हें मालूम है कि नहीं हमारे करप्शन कर चुका है, तो तुम सिस्टम में क्या करोगे, इतना घुमाते रहोगे कि ट्रायल या प्रोसीडिंग स्टार्ट ही ना हो पाए या करप्शन के केस बने ही ना। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो मेन ऑब्जेक्ट लॉ का है टू प्रिवेंट द करप्शन टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जब लॉ साइलेंट है तो हम इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकालेंगे, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहाँ से निकालेंगे, इसके हम ऑब्जेक्ट से निकालेंगे, और दैट्स व्हाई इट इज अप्लीकेबल इवन ऑन द रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, this is the issue of the Kalicharan, this is the argument of the that persons. Okay, इससे बढ़िया तुम लोग नहीं समझ सकते हो, और कुछ नहीं है, बाकी सब डाटा है, ये सब तुम समझ जाओगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था इज वाज, क्या लिखा हुआ था, इज आर वाज, मतलब इट इज अप्लीकेबल। इज मीन्स हु इज इन सर्विस, वाज मीन्स हु वाज सर्विस, दैट इज द रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट। Section 19, before the amendment, word was is and law was silent. Neither it includes nor excludes retired public servants. Kalicharan case said that if the law is silent, we will include the retired public servants. After the amendment in 2019, everything is clear, and this protection is available to every types of public servants. Come to the facts. Everyone knows that this case was decided by Supreme Court. Honorable Justice K.T. Thomas had written this judgment on the 4th August 1998. And everyone knows that facts, issue, arguments, statutory provisions, and these are the statutory provisions, and these are the ratio. These are the other cases. As you know that what happened in the semester exam, students always ask, sir, and only one case is based on this particular case. No, you will not get good marks. For example, here see the question paper. Question is saying that discuss these provisions with supporting cases, not the case. K-E-S-E-S. It means you have to write more than one case, at least more than one case. 2 केस का होना चाहिए, और 2 केस आएगा कहाँ से भाई? You can take these 2 cases, S. Venkataraman versus State, K. Veeraswamy versus Union of India. Although both the acts have been discussed according to the old PC Act, but as you know that old PC is pari materia to new PC, so we can borrow the ratio of these 2 judgments. What happened even in these 2 judgments, and especially in the K. Veeraswamy case, Constitutional Bench had clearly said that PC Act is also applicable to the retired public servants. It means retired public servants should not be allowed to make huge corruption at the last stage of their retirement and at the last stage of their service and to run away. No. They should not be allowed. Otherwise, in the last moment of the service, they can do anything. What happened in the Bellary case, in the Karnataka, in the Reddy brothers case, and the last day when judge was going to retire, at the last day he granted 2 bails, and it was later on found that he had taken 2 crore rupees for 2 bails at the last date. क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है, लोग होता है ना कि अरे यार मर गया तो चलो बुरा भी आदमी है तो भी तारीफ कर दे, बहुत हमारा अच्छा मित्र था, उसकी दुनिया में बड़ी कमी खलती है, तो आदमी सोचता है चलो लास्ट डेट रिटायर हो रहा है तो चलो ठीक है, बेचारा फेयरवेल दो, इसका काम करो कि अभी इस पर थोड़ी ध्यान दो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और आदमी फेयरवेल लेकर के निकल जाता है। लेकिन वो मैटर हाई प्रोफाइल था, बेल मिली तो कैसे मिली, जब बेल मिल गई तो भाई इन्वेस्टिगेशन तो होता ही है, पाया गया कि 2 बेल का 2 करोड़ रुपए लिए थे जज साहब।
अब वो कहेगा लास्ट नो नो आई हैव ऑलरेडी रिटायर्ड, though that's why PC Act will not be applicable upon me because law is silent. What would be happen? Whether object of the PC Act will be frustrated or not? Of course, object of PC will be frustrated. That's why to cover such corrupt persons who make corruption at the last moment of their service, this act will be applicable on the such corrupt people also. That's why in the S. Venkatraman case, ratio was same. In the K. Swami, ratio was same. As you know that I always told you that the K. Swami was the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, and at the last moment he made huge corruptions. And when the FIR was registered, he retired, and after his retirement, charge sheet was submitted. He started to argue, no, no. He argued several cases. He argued several points, but among them, one of the argument of the K. Swami was that, Millards, I have already retired. That's why PC Act is silent. PC Act will not be applicable upon me. Why? Because PC Act is silent. Constitutional bench said that if the law is silent, law in that circumstance, law must be interpreted with the object of that statutes. If law is silent, that must be interpreted with the object of the statute, with the intent of the parliament. So that's why in this Veeraswamy case, constitutional bench said that PC Act is also applicable to the retired public servants. After that, घबराओ मत, आज इनको क्लास में आज खत्म है कर देंगे। आज बहुत दिन से डिस्कस करने दो हुआ ना, थोड़ा बहुत टाइम कम बेसी लगेगा तो कोई बात नहीं, खींच देंगे। तुम लोग देख लें, हो कि गायब हो गए सारे के सारे। चलो, इतनी संख्या काफी है। जंगल में शेरों की संख्या वैसे ही कम हो गई है, कहाँ से लाएंगे हम ज्यादा। फैक्ट्स, as you know that I had already discussed, Kalicharan was ESP. 3 important judgment on his residence. Raid was conducted on which particular date? On the 12th May. 12th May, it means he was in service. Okay. Date of retirement December 31st, 1990. And when the charge sheet was submitted, September 30, 1992, it means after retirement, charge sheet was submitted. Matter heard by the special court constituted under the PC Act, and he argued that, Millards, I have retired public servants, so trial should not be conducted under the PC Act. Special court rejected the argument. He went to High Court. High Court dismissed the petitions, and High Court upheld the decision of the Special Court. By aggrieved from the Special and High Court, he filed a petition before the Supreme Court. Supreme Court also rejected the application, also rejected the appeal of the Kalicharan case. The conclusion is that Kalicharan was not entitled to get benefit either by Special Court or by High Court or by the Supreme Court. Now, matter is pending before the Supreme Court, and what was discussed before the Supreme Court, now we are going to discuss what were the issues. As you know that this is the issue, is the framing of the issue is very difficult, but it creates very easy work for the students. 3 issues: whether the PC Act is applicable to public servant, answer is yes. Whether previous sanction under section 19 is required to conduct trial under the retired public servant, answer is no. The here answer is no. According to which law? According to the ratio of the Kalicharan case. I am discussing the ratio of Kalicharan case. I am not discussing the Amendment Act. Okay. And issue number 2, I have borrowed from your question paper. This is your issue in your question paper whether sanction is required. This issue I had discussed, point number 2. As you know that this was the issue, answer is that no, public servant sanction is not necessary, you can conduct. Whether PC Act must be interpreted in the light of section 197 of CRPC, answer is that no, both are different. Because according to him, I will discuss argument of the appellant. Come to the point.
He argued that Millards, I am retired public servants. I am retired public servants. And if you read whole their provisions, section 1 to 131, although 31 has been repealed, but at that time that was, please, according to him, Honorable Millards, please read whole the Bay Act, section 1 to 31. You will not find even a single words regarding application of this particular act over the retired public servants. If law is silent, so benefit must be given to me because in that way, benefit must be given to me, and this particular act should not be applicable over me. As you know that, why every accused try to claim Millard, don't try according to PC Act, please try according to IPC, because according to the PC Act, cases is tried by the special court. There is a fast cases, मतलब trial within two years, as you know that after amendment, 2 years, maximum 4 years. Yes. In IPC, how many years? Many years, 20 years, 25 years. That is the problem. They know that, and here the punishment is much more harsher. In IPC, punishment is not much more harsher. Here, burden of proof is uh, uh, much more grave over the accused. That's why they always say that Millars, you can try me under any other law, but don't try under this special law. This is very dangerous for me. And he was saying that Millars, I am retired public servants and law is silent, so don't apply over me. Second part regarding 2C, he was saying that Millards, even okay, you have no time, don't read whole Bail Act. Even you can read section 2C, which define the public servant, does not include the retired public servants, so no need to apply over me. It means even section 2C you can get point. Section 19 clause 1C, he was saying that Millards, what is the wording under section 19 1C? Who is, I am not is, I am who was. So clause 1A is not applicable. It is under the central government. Second argument, Millards, be who is under the state government, but even I am not who is, I am who was. Okay. According to him, Millards second part talks about that in case of any other person who does not cover by the class A and class B. For example, if you are selected by the municipality or such local bodies, panchayat, you can, that matter can be covered under this particular act. In case of any other persons, you have to take previous sanctions from whom? From the competent to remove from his office. Competent to remove from his office. He was saying, Millards, I had already retired. So in my case, no one is competent to remove me. No one is competent to remove me. So section 19 is not applicable even over me. It means nothing is applicable on that particular act. Come to the point here that law has been changed after the commencement of CRPC. He was saying, Millards, in the old PC, 1947, law was silent, okay. But 1947 and after that, 1973, CRPC came, and CRPC clearly gives indication that CRPC is applicable over the retired public servants. And after 1973, 1988 Act has been enacted. So it must be drawn inference that legislature had unknowingly forgot to mention the word each. उसका कहना था, देखिए मिलार्ड्स, 1947 में पीसी एक्ट आया, चलिए मान ली कि लॉ साइलेंट था और आप लोगों ने रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स पे लॉ को अप्लाई करते रहे, हम लोगों ने कुछ बोला नहीं. सीआरपीसी आया, लेकिन सीआरपीसी में क्लियर कट कर दिया गया कि इज और वाज दोनों प्रोटेक्शन मिलेगा. लेकिन जब न्यू एक्ट आया, पीसी एक्ट आया, तो उसमें लिखा नहीं गया कि अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा. अब सीआरपीसी से बारो कर लीजिए कि पार्लियामेंट क्या चाहती थी. तो कोर्ट ने कहा कि भाई जब सीआरपीसी पास हुआ और जब 98 पास हुआ,
तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्लियामेंटेरियन को मालूम था कि सीआरपीसी में बात लिखी गई है, फिर भी उन्होंने नहीं लिखा, तो इसका मतलब हम ये ड्रॉ करके चलेंगे कि नॉलेज था फिर भी नहीं लिखा गया। इट मीन दे डिड नॉट इंटेंशनली पुट अबाउट द रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स, उसका कहना था। अब हम ये मान के चलेंगे पार्लियामेंट ने जानबूझ करके रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता था, इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी और पीसी दोनों टोटली डिफरेंट है। सीआरपीसी ऑलवेज टॉक्स अबाउट जनरल लॉ एंड पीसी टॉक्स अबाउट द स्पेशल लॉ। These are the statutory provisions I have already discussed, I think, in this case. Even the 2C, what is the 2C, define the public servant, but it is silent regarding retired public servants. Section 31 deals about criminal misconduct, what is the criminal misconduct, and if any public servants commit the criminal misconduct, he will be punished under the Section 13 Clause 2. Old PC talks about the previous sanctions in the case of retired public servants, and this is a parliamentaria of Section 19. Section 19 of the new CPC, you can say that this is the parliamentaria of Section 6 of the old PC. Section 197, previous sanctions, this was not silent, no protections for retired public servant. Here in the old CRPC, protection is available to each types of servants, whether he is acting public servants or retired public servant. My point is that although here the wording is that in both the sections 197, 197, that's why it is not. I have written knowingly, nothing is wrong. Okay, grounds old CRPC and new CRPC. What is difference between both the sections? As you know that acting public servants, both were giving the protections, but retired public servant, in this case, no protections, but here is protections. Okay, that this is the difference between old CRPC and new CRPC. If you come the PC Act and CRPC before 2018, PC Act was silent, it was clearly talking, but after the amendment, both talks about clearly and it clearly, no difference. Here comparison, ground, acting public servants, retired public servant. What is the position under the PC Act? This is the, I think you can get, nothing is, you are smart, you can read and remember. Ratio, what was the ratio of this particular case? Wait, एक बार देख लेना चाहता हूँ कितना है 10 मिनट खत्म कर लिया जाएगा. Yes, ratio. In this case, ratio is on 2 points. There are 2 points. First point was that regarding the application of the whole PC over the retired public servants. This was the one issue. And second issue was that if that PC Act is applicable, whether sanction under Section 19 is required or not. बस एक मिनट होगा. देखो, अब तुम लोग कहोगे कि सर आप 3-4 दिन एक जजमेंट को पढ़ते रहे, 4 पेज का जजमेंट था, उसमें पढ़े क्या आप, जो आप इतना टाइम लेकर के पढ़ते रह गए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं पढ़ा तो बहुत, वास्तव में मैं एक बार तो 12:30 बजे सो गया, फिर मुझे लगा कि यार पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर 2:30 बजे नींद खुल गई, फिर पढ़ा उसको. अब तुम कहोगे 4 पेज में इतना क्या भौकाल बना रहे हैं? क्यों मैं कंफ्यूज था, क्यों पढ़ाने की पोजीशन में नहीं आ पा रहा था? उसका रीजन ये था कि मैं इसमें 2 क्वेश्चन था और मैं दोनों क्वेश्चन को एक दूसरे से मिंगल करके एक ही क्वेश्चन पकड़ रहा था, इसीलिए आर्गुमेंट को डिफर करना बहुत मुश्किल हो रहा था. मेरा क्या क्वेश्चन था, मैं किस पर कंसंट्रेट कर रहा था? मैं जो तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो सैंक्शन वाला है, इसी पर मैं कंसंट्रेट किया हुआ था. और जब आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 19 पर होगा. जब आप इस पर कंसंट्रेट करेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन सेक्शन 19 पर रहेगा कि क्या रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में सैंक्शंस जरूरी है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन ये था कि क्या होल पीसी एक्ट will be applicable on the Kalicharan or not.
पहले तो उसका यही दावा था कि मिलार्ड्स पीसी एक्ट का कोई भी सेक्शन 1 से लेकर के 31 तक हमारे मामले में कोई भी अप्लीकेबल नहीं होगा। पहला उसका यही था। और दूसरा कहना था कि अगर मान भी लिए, चलो ठीक है कि अप्लीकेबल होगा, अगर मान भी लिए कि अप्लीकेबल होगा, तो सेक्शन 19 के अंतर्गत प्रीवियस सैंक्शन मेरे मामले में आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आपको प्रीवियस सैंक्शन नहीं देती है तो आप हमारे पर ट्रायल नहीं चला सकते, क्योंकि उसको मालूम था, वो आईपीएस ऑफिसर था, सिस्टम में उसकी पकड़ थी, उसको मालूम था कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, अगर बाई चांस हमारे एक्ट एक्ट अप्लीकेबल होगा तो जब वो सैंक्शन के लिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ऐसे केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मामला था, क्योंकि वो हमें लग रहा है एसपी से जो भी था सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो हमारा सिस्टम में इतना पकड़ है कि उनको सैंक्शन लेने में ही 4 साल लग जाएगा, उनको सैंक्शन मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा ही नहीं तो हमारे ऊपर ट्रायल ही नहीं चलेगा। ये दो आर्गुमेंट कर रहा था, तो इसीलिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। तुम लोग बस इसमें 2 इशू है, एक नहीं। इसीलिए मैंने जब फ्रेम किया क्वेश्चन को, इसीलिए मैं जब इशू फ्रेम किया तो मैंने देखो 2 इशू फ्रेम कर दिया, 3 फ्रेम किया लेकिन 2 मेन था। पहला मैंने इशू बनाया है कि वेदर पीसी एक्ट इज अप्लीकेबल टू रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स। ये पहला इसका यही था कि भाई पीसी एक्ट तो कोई भी प्रोविजन अप्लीकेबल होगा ही नहीं। जैसे हम कह देंगे भाई हम फॉरेनर हैं, हमारे ऊपर आईपीसी अप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आईपीसी अप्लीकेबल होगा कि नहीं। अगर एक बार डिसाइड हो गया कि हाँ भाई आप पर आईपीसी अप्लीकेबल होगा, तब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या मैंने मर्डर किया है कि नहीं किया है। इसका यही पॉइंट था, पहले तो यही इसने रेज कर दिया कि पीसी का कोई भी प्रोविजन हमारे ऊपर अप्लीकेबल होगा ही नहीं। और दूसरा पॉइंट था कि अगर अप्लीकेबल होगा भी तब सेक्शन 19 के अंतर्गत तब जाइए गवर्नमेंट से सैंक्शन लेकर के आइए, तब जाकर के हमारे ऊपर केस चलाइएगा, और हमारे सिस्टम में इतनी पकड़ है कि हम आपको सैंक्शन लेने नहीं देंगे। ये था। तो अब इसको हम पहले इस इश्यू को डिस्कस करेंगे, ये दोनों डिस्कस कर लूंगा और इसके बाद ये डिस्कस करोगे। ये तुम्हारे सेमेस्टर के लिए है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये वाला पॉइंट तुम्हारे नॉलेज के लिए है। इसीलिए जब तक टीचर खुद क्लियर ना हो तब तक लग जाता है क्या पढ़ाएं यार, इससे अच्छा कि बच्चे को छोड़ दें जा करके अपनी जिंदगी जिए। हाँ, अब रेशियो में आ जाओ। इसने कहा पहला पॉइंट था, देखो 2 ही पॉइंट में डिस्कस करूंगा, एक वो पॉइंट है एंड दिस इज द अनदर सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट आई हैव टू डिस्कस, नथिंग आई हैव टू डिस्कस, ओके। Regarding the first point, he was saying, Millards, this PC Act is not applicable over the retired servants. Question was that why? He was saying that law is silent, and if law is silent, law must be interpreted to give the benefit to the accused. Okay, but what was observed by the Supreme Court? Supreme Court said that no, that is not true. Otherwise, at the last moment, for example, I had given the example regarding the bail of the Reddy brothers. For example, here court did not quote what was observed. Court said that this is not, there is no indication anywhere in the above provision that an offence committed by a public servant under the act would vanish off, word क्या लिखा हुआ, vanish off from the penal liability at the moment he demits his office from the public servants. कोर्ट ने कहा कि लॉ में ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर वो रिटायर्ड हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं लिखा है। तुम कह रहे हो कि नहीं लॉ साइलेंट है तो अप्लीकेबल नहीं होगा, तो लॉ ये भी तो नहीं कह रहा है कि नहीं हाँ सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। जब लॉ साइलेंट तो हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हमें उसके इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो, इफ द इंटरप्रिटेशन नाउ स्टार्ट टू बी प्लेस्ड बाय द अपीलांट इज एक्सेप्टेड। कोर्ट कह रहा कि अगर जैसा तुम इंटरप्रिटेशन के आर्गुमेंट कर रहे हो, अगर वैसा ही आर्गुमेंट हम एक्सेप्ट कर लें तो अन्याय हो जाएगा, घोर अन्याय हो जाएगा। कैसे अन्याय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कह रहा कि जैसे तुम्हारा इंटरप्रिटेशन, एज सुन एज आई एक्सेप्ट योर इंटरप्रिटेशन, व्हाट वुड बी फैक्ट, इट वुड बी
it would lead to the absurd positions. What would be absurd position? That any public servant could commit the offense under the act soon before retiring or demitting his office. Soon before, this is the important words here, that soon before retirement or demitting his office, and करेगा ही करेगा, और इतना ही नहीं, और खतरनाक है वो, एंड thus avert any prosecution for it, और ये करेगा, लास्ट टाइम में करप्शन करेगा और मैक्सिमम प्रयास करेगा कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलने वाला है वो एन किन प्रकार स्टार्ट हो ही ना पाए, या अगर स्टार्ट हो भी जाए, और व्हेन एनी पब्लिक सर्वेंट इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट ही कैन सिक्योर एन एस्केप फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द ट्रायल एट द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। अगर जैसे मान लीजिए कि चलने वाला ट्रायल है, वो क्या करेगा, अपनी पूरी ताकत झोंक देगा कि बस 4 महीने का बस किसी तरह का टाइम कट जाए, इसके बाद मेरा सुपर एनुएशन, मतलब सर्विस का सुपर एनुएशन रिटायरमेंट कहलाता है। जैसे हमारा सुपर एनुएशन 1950 है, 2050 हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू सर्विस करते हैं और इतने सालों तक जिंदा रहते हैं, तो हम 2050 में रिटायर होंगे, मतलब अगले 30 साल तक हम डीयू को सर्विस देंगे। अब 30 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों की जनरेशन आ जाएगी और उसको भी पढ़ाऊंगा, और तुम्हें तो मान लीजिए टाइम पास करा ही रहा। ये है, तो उसको कहते हैं, जो रिटायरमेंट का जो डेट होता है उसको सुपर एनुएशन कहते हैं एक लीगल टर्म में। तो ये कह रहा है कि उसको जब मालूम है कि 4 महीने में हम रिटायर होने वाले हैं, तो कुछ भी कर जाएगा, बस चाहेगा कि केस स्टार्ट ना हो पाए, कि लॉ साइलेंट है तो अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, ये अप्लीकेबल होना चाहिए, अदरवाइज ये जो डेंजर है, इस तरह का एब्सर्ड सिचुएशन है, वो एराइज हो सकता है। दैट्स व्हाई नाउ the position is very crystal clear. PC Act is applicable on the public servant also. Why? This is the reason. This is the REASON. This is the reason. Come to the second position. What was the second argument? He was saying, okay, Millards, if you are not agree, then okay, it is applicable over me. But is that you can't start against, you can't take cognizance against me. Why? Because my point is that I have you have to take cognizance under section 19. Sorry, you have to take sanctions under section 19. देखो मैं थोड़ा सा ऊपर का जो आर्गुमेंट था ना, वो थोड़ा सा मैं गलत कर दिया था, अभी मैं समझ आ गया। ऊपर के आर्गुमेंट में वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा ABC तीनों कवर नहीं होगा, वो ये कह रहा है कि किसी न किसी में कवर होगा, वो कवर करने के लिए आर्गुमेंट करा रहा है कि नहीं इसमें कवर होगा और सैंक्शन लेकर के आइए। इसके लिए सॉरी, मैं वहां थोड़ा सा मिस कर गया था। वो शायद आर्गुमेंट कर रहा है कि हमारा मैटर सेक्शन 19 के 1 के C में कवर होना चाहिए। उसका कहना था कि 19(1)C में इसलिए कवर होना चाहिए, इसलिए को करेक्शन कर देता हूँ, कई बार हो जाता है गलती। चलिए कि मैं इज में नहीं हूँ, इज में मैं कवर नहीं हो रहा हूँ, बट माई मैटर विल बी कवर्ड अंडर द इन एनी अदर पर्सन, इसमें मेरा मैटर कवर होना चाहिए, और जब इसमें कवर होना चाहिए तो मुझे आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा। अब इसी पर हम आर्गुमेंट करेंगे, ठीक ना? थोड़ा सा एक गलती हो गई है मुझसे। प्रीवियस सैंक्शंस में क्वेश्चन ये था कि वेदर प्रीवियस सैंक्शंस in case of retired servant is necessary or not. As you know that we have to take the old PC. What was the position of old PC? As you know that old PC section 6 is pari materia of section 6 of the old PC this previous sanction required for taking cognizance. This sanction is pari materia, that is similar of section 19 of the PC Act 1988. Okay, तो अब क्या होगा कि जब भाई दोनों सिमिलर हैं, तो जो जजमेंट सेक्शन 6 के लिए डिसाइड हुआ था, उस जजमेंट के रेशियो को हम बारो कर सकते हैं, हम नए एक्ट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोग देख रहे हो कि मैंने क्या किया है, मैंने एक जजमेंट लिया है, वेंकट रमन का केस है, अब एक कब डिसाइड हुआ है, 1958 में, तो 1958 में लिया है, तो मैं नए एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए क्यों इसकी हेल्प ले रहा हूँ?
इसलिए हेल्प ले रहा हूं क्योंकि सेक्शन 6 ओल्ड पीसी का एंड सेक्शन 19 न्यू पीसी का both are just similar to each other. That's why I am taking the ratio from the old judgment also. What was the old judgment? In this particular case, Honorable Supreme Court, these two judgments have also been cited by the Justice K.T. Thomas. Okay, I am not giving new judgment. These are two judgments. Venkatraman and V. Ramaswamy case has been quoted in this judgment. That's why I am quoting. In the Venkatraman case, what was the Honorable Supreme Court adopted? It was adopted that Section 6 does not require previous sanction in case of retired officer. It means no. कहा गया कि अगर कोई रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट हो जाए उसका मैटर रिटायर्ड सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी सेक्शन जो कवर नहीं करता। इसका मतलब न ही उसका ए में आ रहा है, न बी में आ रहा है, न सी में आ रहा है। इसी तरह का क्लास पहले भी लॉ था। अब इसी तरह का जजमेंट आया बीरा स्वामी केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यही कहा कि रिटायर्ड हो जाने के बाद अगर आपको चाहे ओल्ड पीसी हो उसके सेक्शन 6 के अंतर्गत या सेक्शन न्यूज पीसी के सेक्शन 19 के अंतर्गत आपको सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इन द कालीचरण केस व्हाट वाज कंक्लूडेड in the Kalicharan case, it was concluded that no sanction is required. It was observed that what was observed, Supreme Court observed a public servant who committed an offence mentioned in the Act. In the Act means Prevention of Corruption Act. While he was public servant, can be prosecuted with the sanction contemplated under Section 19 of the Act if he continues to be public servant when that court take cognizance. It means this part is for the public servant, continue public servant, acting public servant. This ratio is regarding the acting public servant. But this two line talks about retired public servant. Okay, come to the point. But means but. Let's say that but if he ceases to be a public servant, if he ceases to be a public servant, अगर वो सीज कर जाए तो मतलब कई मामले तो भाई उसको डिसमिस है जो भी हो, सीज करने का मतलब फॉर एग्जांपल रिटायर हो जाए। If he ceases to be public servant by that time when the court is taking cognizance, the court can take cognizance of the offense. Okay, the most important word is that without any such sanction. Court may take cognizance without such sanctions. So conclusion is that from the judgment of from the ratio of the Venkatraman case, Sri Ramaswamy case and Kalicharan case, it can be concluded that no sanction is required in the case of retired public servants. इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूंगा, इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूव करने का क्या है, बस यहाँ लिख दूंगा कि upon the basis of ratio of the Venkatraman, Bilaswamy and Kalicharan case, it can be concluded that no sanction is required in the case of public servants. Okay. Last argument was that I will take only 2 minutes. ले लो क्लास क्योंकि फंस जाएगा ना तो बहुत और रह जाता है, दिक्कत करता है। ठीक ना, 5 मिनट का टाइम है। Yes. Last point is that PC Act, according to third argument, he was saying Millards, after the new CRPC, law has been changed. According to him, even in the old CRPC, there was no provision, but in the new CRPC, there is a provision. It means now, after the 1973, parliamentarian wants to give the protection to the public servants. उसने कहा कि मिलार्स शुरुआती दौर में तो हो सकता है कि पार्लियामेंटेरियन प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता था, लेकिन आप देखिए 1947 में तो पार्लियामेंटेरियन साथ में थे, दे वर साइलेंट, लेकिन 1973 में सीआरपीसी में क्लियरली कह दिया गया कि नहीं, पब्लिक सर्वेंट के मामले में सैंक्शन जरूरी है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन कहीं ना कहीं चाह रहा है, और जब पीसी एक्ट जब लिखा गया तो भूल गया होगा लिखना, ध्यान से उतर गया होगा, तो इसलिए अब साइलेंट है, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए आप पीसी एक्ट को इंटरप्रेट करिए।
अब सुप्रीम कोर्ट सरप्राइज हो गया, कहा कि नहीं भाई, पार्लियामेंटेरियन को हम ये नहीं कह सकते कि भूल गया। पार्लियामेंटेरियन का मतलब दे आर वेरी स्मार्ट, they have entitled to interpret and to enact the law. We are only to interpret the law, we can't enact the law. अब कोर्ट ने कहा कि भाई सीआरपीसी में चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि नहीं इज और वाज दोनों लिखा गया था, और वहां हम नए एक्ट में हम वाज इंक्लूड कर दें। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन को मालूम था कि सीआरपीसी में ये प्रोविजन है, और जानबूझ करके पीसी में नहीं लिखा। बस 1 मिनट लूंगा। अपिलांट ने कहा कि भूल गया होगा इसलिए नहीं लिखा, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो जानबूझ करके नहीं लिखा, इसलिए हम तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे। इसलिए both the law must be interpreted differently. So that's why the last argument was also rejected, and decision of special court, high court was upheld and appeal was dismissed. Conclusion, as you know that conclusion ratio of decision of this case were cited in several cases. इसका रेशियो जो था ना, लास्ट में 4-5 जजमेंट और मैं पढ़ा, उसमें इसको साइट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में साइट किया गया है सब। और रेशियो ऑफ दिस केस हैज बीन ओवररूल्ड बाय द पीसी एक्ट। ओके, फॉर द एग्जांपल स्टडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज ए वन corrupt public servant, that is the Achilles, who served the country during 2000 to 2020, and if trial will be started in 2019, it means acting service. This is acting service. If trial started in 2021, retired. Okay, it means according to the Kalicharan case, sanction is necessary. Okay, but in case of retired, sanction is not necessary. Okay, according to the amendment effect, Achilles, same thing, corrupt officer. If his trial started in 2019, nothing is doubt, sanction is necessary. Regarding 2021, after retirement, is necessary. I hope that you have got the answer of your questions, and wholeheartedly thanks to everyone who continuously supported in this journey, and thanks and enjoy your life. Okay, best